just trying first live streaming actually. Okay, so don't worry how it works. Okay, so don't worry, I'm just trying to how to conduct live streaming actually. Where is just wait a few minutes, then I'll start actually. Okay, let's talk. Let's start. I don't know, it's one-way communications. If you are here, Aparna, Purnima, Apna, and others are messaging me. Can you send me someone in comment that am I audible to you? My voice is audible. There are five are there. पांच लोग voice is breaking. Maybe due to network, I don't know. Maybe due to I'm just trying. First time I'm just trying to conduct a live streaming. There are so many setup over here. It's not through mobile only. I'm using my the ZV-10 camera. Okay. वॉइस प्रॉब्लम है अच्छा वॉइस प्रॉब्लम क्यों है थोड़ा सा मुझे इस पे चेक करने दो वॉइस ऑडियो कैप्चर डिफॉल्ट स्पीकर टू रियल टेक वीडियो Oh, 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 oh.
next time I'll try to. This is my first time. I was just trying to, go live through this, and I'm not sure which uh, device works for the, for mic actually. I can try. Basically, this is the testing session. अगर कोई हो हमारे students live में, तो you can just give me a feedback how it works. Okay. If anyone from the BBA who are watching me, you can send me a text or you can say me through a comment actually. Anyway, just I'm trying. Anyone के अगर कोई हमारे स्टूडेंट्स में से बीबीए के स्टूडेंट्स में से कोई मुझे सुन रहे हो तो जस्ट गिव मी अ टेक्स्ट कि मेरा मेरा वॉइस जो है वो ऑडिबल है तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं कमेंट नहीं देख पा रहा हूँ बेसिकली। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। इससे पहले मैं देख पा रहा था। चेक माय नेम उत्सव तिवारी। बहुत जल्दी हो जाता है, फर्स्ट टाइम में ऐसा ही होता है। इट्स ओके। ठीक है। मेरी आवाज सुनाई दे रही है तुम लोगों को? उत्सव, am I audible to you? Just say yes or not. Okay. Let's start. This is my first session through YouTube live session. I'm just trying to, a kind of, I'm just trying to create a kind of ecosystem actually. Ecosystem means we need, some equipment to broadcast a proper live streaming actually. Okay. We need an external camera. Maybe sometimes it happens with that कि हमारा जो लैपटॉप है वो अच्छा से काम नहीं कर रहा है, जो हमारा इंटीग्रेटेड वेब कैम है वो भी कभी ठीक से काम नहीं करता है। समटाइम्स दिस इज माइक्रोफोन, मे बी आई नीड टू अपग्रेड दिस माइक्रोफोन ऑल्सो। एंड अदर थिंग इज व्हाट आई नीड टू अपग्रेड इज जस्ट वन, आई जस्ट स्टार्टेड यूजिंग वन software, that is OBS, but there are many people using Zoom also. I'm just exploring which one is better, then I will try to conduct classes like this in future actually. And but this session is totally dedicated to the BBA student, BBA and the MBA students. If anyone who can watch me live can enjoy my session, can be benefited through my session actually. Now, actually in my last session, my online session, I have explained about the organizing actually. Today I'll try to explain about after organizing, we study staffing. Okay. I know it's, I'm just keep sitting. That's why my system is also not good. Like I don't have a whiteboard or the blackboard or in the digital board behind me. And the PPT is also not with me. I'm just trying to, deliver my some lecture in brief about the staffing. Okay, after organizing in management, we uh, study about the staffing actually. It is one of the functions of management in which we try to, place the right person at right place. Okay, it's basically, it's very simple to say that putting right person at right place, but a lot of activities we need to perform to put a right person at a right place. Okay, a lot of activity, it means we need to plan for the human resources. The first, if you go through the functions of staffing, the first and foremost function of staffing is, uh, आज डिबेट होना था सर,
ओके, डिबेट हम जूम पे कर लेंगे, ठीक है। Because I will explore also कि how we integrate others speaker uh, into the discussions actually. This is my first time. अगर तुम लोगों में से कोई किसी के पास मतलब क्यूरियोसिटी है, अगर किसी को आता है कि कैसे हम कई लोगों का मतलब पैनल डिस्कशंस मतलब इसमें इंटीग्रेट करें, ठीक है। इसमें क्योंकि एक ही व्यूअर्स है, ओबीएस सॉरी द जूम में क्या होता है, व्हाट हैपेंस, जूम में कई सारे लोग हम लोग आपस में बात कर सकते हैं, बट दैट जूम सेशन हाउ कैन बी go for live streaming actually. That's complex for me. That was complex for me actually. That's why I use OBS. Next time I'll try to integrate the Zoom with this live streaming session. Okay, I'll try. Let's learn actually. I also learn. I also try to cater the needs of Gen Z actually. जो Gen Z बच्चे हैं अभी, I don't know. I'm not quite sure you are Gen Z or you all are Gen Z. Okay, I'm just trying to cater your needs ki how we can optimize actually our teachings actually. As we learn in management, we need to optimize everything. That's why we are just trying to optimize uh, uh, teaching also, and you need to optimize your learning. Okay, now let's start again. Staffing. I said that if you go through the function of staffing, you will find that human resources planning. Okay, after human resources planning, then recruitment, selection, after that training, then orientation, placement. After placing the staff, you need to evaluate the performance, that is performance appraisal, salary administration and payroll management. Okay, then grievance handling. These are the some of the function of staffing. Basically, it is the part of human resources management. You know that in organizing, what we do actually in organizing, we grouping the activities, entire activities of the organizations into financial management, marketing management, production management, and the human resources management. Okay, then human resources management is one of the system or the department of organizations. You can say that the human resources management is the formal system in an organization who take care of the employee from entry to exit. Okay, तो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का काम है एम्प्लॉय को एग्जिट से एंट्री से लेके एग्जिट तक, जब वो एंट्री करता है एंट्री से लेके उसका एग्जिट तक जितनी भी चीजें हैं होती है, ईच एंड एवरी एक्टिविटीज, ठीक है, उसका ख्याल रखना या एम्प्लॉय का ख्याल रखना, उसका एक छोटा सा पार्ट है, द स्मॉल पार्ट ऑफ human resources management is staffing, in which we just plan for the human resources, we recruit the human resources, we select the human resources, we train the human resources, we orient the human resources, and we uh, offer salary to the human resources, we handle the grievance of the human resources. These are the some of the activities we need to perform within the function of staffing. But the, 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 the most important objective of staffing is to place the right person at right place, and it's too difficult to place the right person at right place. Okay, I have given examples of a real time situation or real situations about the staffing or about the right person at right place. There are so many examples. I have told you that sometimes it's hard to find a right candidate for the employer. Employer के लिए जो right candidate पाना बहुत मुश्किल होता है, और sometimes it's hard to find the right place for the candidate also. Sometimes mismatch is also, जो हमें चाहिए एम्प्लॉयर को चाहिए वो आपके पास नहीं होता है, जो आपके पास है वो हमें नहीं चाहिए होता है, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल है कि मतलब है कि आपके पास जैसे स्किल हमारा मिसमैच हो जाता है, आपके पास स्किल्स है, आई एम नॉट सेइंग कि एम्प्लॉय के पास स्किल्स
नहीं होता है बट नॉट द राइट स्किल्स। लाइक आपके पास की है लेकिन राइट की नहीं है। ठीक है, ये एक बेस्ट एग्जांपल है। तो इसलिए इट्स हार्ड टू फाइंड अ राइट कैंडिडेट। ठीक है, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि इट्स नॉट सिंपल टू हायर और क्या कहते हैं, recruit a right candidate or place a right candidate. It's not simple, it's not easy, it's hard। ठीक है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज का स्टाफिंग या रिक्रूटमेंट का बजट होता है, बहुत बड़ा बजट होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, कैंपस प्लेसमेंट करते हैं थ्रू आउट द इंडिया, पैन इंडिया। इवन कुछ को जरूरत पड़ती है तो मतलब है कि अक्रॉस द बॉर्डर भी चले जाते हैं। आप देखेंगे जिनके पास बहुत ज्यादा हायरिंग कैपेसिटी है, पैसे हैं, तो बाहर के लोग अमेरिका, यूएस, यूके, जितने भी एडवांस कंट्री है, जापान, वो सब आते हैं इंडिया हायर करने के लिए टैलेंट्स को। ठीक है, तो सोचो कि अक्रॉस द बॉर्डर चला जाता है, तो हायरिंग, प्लेसिंग अ राइट पर्सन इज नॉट सिंपल। ओके, तो दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टाफिंग एक्चुअली। ओके, जहां भी आप स्टाफिंग में जाओगे, आजकल बहुत सारे बिजनेस कंसल्टेंट या रिक्रूटमेंट एजेंसी ये सारे वर्क करने लगे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि कहाँ से, ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग से। ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ स्टाफिंग। जब हम ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग करते हैं ना, तो उसमें हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ द स्किल्स एंड द डिमांड ऑफ द स्किल्स, बेसिकली डिमांड और सप्लाई की हम बात करते हैं कि हमारे पास रिक्वायरमेंट कितना है और कितना अवेलेबल है। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई। इसमें जब डेफिसिट होता है तब हम जाते हैं रिक्रूटमेंट्स के लिए। तो ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग के लिए तो क्या करते हैं नॉर्मली, अगर हमारा एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो ह्यूमन रिसोर्सेज इन्वेंट्री सिस्टम होता है, इसमें स्टाफ का सारा डिटेल होता है। ह्यूमन रिसोर्सेज इन्वेंट्री सिस्टम in which entire detail of the staff are kept, like कितने स्टाफ है हमारे, उसके पास स्किल्स क्या है, एजुकेशनल बैकग्राउंड कितना है, कब वो रिटायर होंगे। ठीक है, फिर अपने गोल्स के हिसाब से हमें जरूरत कितना है। अगर हमारे पास सरप्लस स्टाफ होता है तो हम उन्हें पिंकली या मतलब है कि रिलीज कर देते हैं। उन्हें कहते हैं कि वॉलंटरी रिटायरमेंट भी समटाइम्स होता है बहुत सारे स्टाफ का। ठीक है, बहुत सारे लोगों का जो जैसे कहते हैं ना, किक आउट करना। ठीक है, तो लेकिन जब डेफिसिट होता है तब हम रिक्रूटमेंट के लिए जाते हैं। बट बिफोर द रिक्रूटमेंट, थ्रू द ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग, वी नीड टू डिजाइन अ जॉब। हमको जॉब डिजाइन करना पड़ता है, उससे पहले जॉब का एवेल्युएशन करना पड़ता है। जॉब एवेल्युएशन करना पड़ता है, डिटेल अबाउट, वी नीड टू कलेक्ट द ईच एंड एवरी डिटेल अबाउट द जॉब। ठीक है, जब डिटेल आपको पता चलेगा तब पता चलेगा कि कौन कौन से स्किल्स चाहिए उस जॉब को करने के लिए। तो जॉब एवेल्युएशन में क्या होता है, जो एचआर प्रोफेशनल होता है वो जॉब के साइट पे जाके इवेलुएट करता है कि कितना हार्ड वर्किंग है, कौन सा स्किल्स चाहिए। मान के चलो एक मैकेनिकल इंजीनियर का जॉब है, तो मैकेनिकल इंजीनियर का जॉब उसके साइट पे जाके ही पता चलेगा। कितना उसे रेंच घुमाना पड़ता है, कितना उसे मशीन के साथ कौन कौन सा स्किल्स चाहिए, क्या नॉलेज चाहिए, किस एटमॉस्फेयर में काम करेगा, ये सारी चीजें होती है। ठीक है, तो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि जॉब एवेल्युएशन, जॉब डिजाइन, ठीक है, ये सब चीजें हम बिफोर द रिक्रूटमेंट करते हैं। जो जॉब एवेल्युएशन का आउटकम आता है, जॉब डिस्क्रिप्शन आता है। ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या, डिटेल्ड एक डॉक्यूमेंट्स होता है जिसमें डिटेल इंफॉर्मेशन होता है अबाउट द जॉब। अब क्या डिटेल इंफॉर्मेशन है, दैट इज KSA, knowledge, skills and abilities required to perform a key responsibility area, KRA। तो KSA and KRA मोस्ट सिग्निफिकेंट है। अदरवाइज जो जॉब डिस्क्रिप्शंस में बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी चीजें होने का मतलब बोले तो प्लेस ऑफ द जॉब, लोकेशन ऑफ द जॉब, ड्यूटी आवर, ठीक है, आपका की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा, एंड व्हाट विल बी द एटमॉस्फेयर ऑफ द कंपनी। देयर आर सो मेनी थिंग दैट includes, yeah, that is integrated into the job descriptions।
ठीक है, बट सिंपली इट इज अ डॉक्यूमेंट्स. इफ यू वांट टू सी द जॉब डिस्क्रिप्शन, गो टू द वेब पोर्टल्स या जॉब पोर्टल्स. आप जॉब पोर्टल्स पे जाइए जहां आपको बहुत सारे जॉब के जॉब डिस्क्रिप्शंस मिल जाएंगे, क्योंकि एडवर्टीजमेंट जो होता है ना जॉब का रिक्रूटमेंट के लिए, वहां जॉब डिस्क्रिप्शंस भी मिलेगा. और क्योंकि आप एक प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट हो, यू आर द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट, the prospective employee, then you need to see the job description. You need to go through the key responsibility area, कि what responsibility you are going to perform in future. Okay, कौन से responsibility को आप perform करना चाहते हैं future में. तो आपको ऐसे भी जाना चाहिए job description. लेकिन come back to the our points. हमने क्या कहा, if we go through the staffing, the first and foremost function of staffing is human resources planning. After that, recruitment. Okay. And what is recruitment? Because if you are, if you are not from the management background, that it's too difficult for you to differentiate between the recruitment and selection. Both are different. These two terms looks very similar. As a layman, we can say that recruitment and selection are the same things. Okay, but in human resources, recruitment is searching right candidate. Searching right candidate. The objectives of recruitment is create a pool of applicant. मतलब applicant को जमा करना. ठीक है. अब उसके लिए आपको जो करना हो, क्योंकि जितना ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशंस आएगा उतना आपको राइट कैंडिडेट मिलेगा आपको. ठीक है. The objectives of recruitment is to create a pool of applicant, basically searching a right candidate. Head hunting होता है. अब सर्च करना, बहुत सारा टर्म सुने होंगे, हेड हंटिंग. ठीक है. तो बहुत सारे टर्म्स इंडस्ट्री में यूज होता है. तो रिक्रूटमेंट को अगर आप और डिटेल में आप देखना चाहें तो रिक्रूटमेंट का भी एक लंबा प्रोसेस होता है. रिक्रूटमेंट्स के लिए हम पहले एडवर्टीजमेंट देते हैं. ठीक है. एडवर्टीजमेंट के बाद क्या करते हैं, उसे शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं कैंडिडेट को. उससे पहले इनिशियल स्क्रीनिंग होता है, छटनी होता है, ये सारा रिक्रूटमेंट के थ्रू होता है. ठीक है. आफ्टर रिक्रूटमेंट जब हम सिलेक्शन में जाते हैं, सिलेक्शन क्या होता है, चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट. अब हमने रिक्रूटमेंट के थ्रू जो पूल ऑफ एप्लीकेंट हमने जमा किया है, ठीक है, जो पूल ऑफ एप्लीकेंट हमने जमा किया उसी में से बेस्ट कैंडिडेट को चुनना ही, ठीक है, सिलेक्शन कहलाता है. सिलेक्शन इज द चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट अमंग द पूल ऑफ एप्लीकेंट. अब सिलेक्शन का भी एक लंबा प्रोसेस होता है. किसी एम्प्लॉय को सिलेक्ट करते हैं तो आपको पता है कि नॉलेज एबिलिटीज टेस्ट हम लेते ही लेते हैं. ठीक है. केएसए लेते हैं, उसमें पहले फिजिकल टेस्ट लेते हैं, रिटन टेस्ट लेते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं. ठीक है. स्किल टेस्ट लेते हैं. तो बहुत तरह का टेस्ट लेने के बाद फिर फिजिकल एग्जामिनेशंस होता है, फिर हम जॉब ऑफर करते हैं. ठीक है. तो आपको मैंने आज, बिकॉज इट्स फर्स्ट डे, आई एम जस्ट गोइंग फॉर द लाइव स्ट्रीमिंग एंड एज एन एमेच्योर आई एम नॉट वेरी प्रोफेशनल. ठीक है. Because I also want to learn how to conduct online classes through the YouTube. This is my first session through the YouTube. Okay. So I just share the three things in staffing. Is first is human resources planning, then the recruitment and selection. I'll brush it up in the next class and I'll continue to the next function of the uh, staffing. Okay. For the time being, thank you so much. मिलते हैं फिर इसी तरह के सेशन में, and have a good day.